स्क्रीन शेयर है ना सबके साथ? Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is actually lecture number 5. Don't confuse yourself with this lecture number 6. A lecture adopted from lectures from Dr. Sayyid Muhammad Ali. This lecture will be about the evaluation of dental. In the last class, we have already discussed what is the tender and bidding process, and what are different types of bidding process, and what are the different documents required for bidding process. So once you have submitted the bids, your proposals, technical proposals and financial proposals, now how your proposals will be evaluated. So this lecture will be about all the evaluation of the submitted proposals or bids, etc., and the selection of the final or winning party. Before going to the next slide, I would like to ask you people, do you remember what is single stage, single envelope and single stage 2 envelope procedure? Or can you list down the documents which were discussed in the last lecture, documents required for the bidding purpose? Anyone? कोई क्वेश्चन का आंसर? किसी को नहीं याद? सर सिंगल स्टेज सिंगल इन्वेलप में हमारे पास एक ही इन्वेलप होता है, उसमें हमारे पास टेक्निकल प्रपोजल और फाइनेंशियल प्रपोजल होता है. सिंगल स्टेज वी कैन नॉट रिवाइज टेक्निकल प्रपोजल. गुड. सिंगल स्टेज डबल इन्वेलप जो है सर, उसमें हमारे पास दो इन्वेलप होते हैं सर. एक में टेक्निकल प्रपोजल होते हैं और एक में फाइनेंशियल प्रपोजल होते हैं सर. और वो दोनों हम सेपरेटली सबमिट करते हैं सर. ठीक है. ऑलराइट. गुड. सर एक हमारे पास आई थिंक डबल स्टेज होता है सर. 2 स्टेज प्रोसीजर. 2 स्टेज. फर्स्ट स्टेज में हम सर टेक्निकल प्रपोजल सबमिट करते हैं और फाइनेंशियल प्रपोजल सबमिट नहीं करते हैं सर. ठीक है. एजेंसी जो है वो सर पहले देखती है कि रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं कि नहीं मीट करते हैं. अगर रिक्वायरमेंट्स को मीट करते हैं सर तो उसके बाद अगर कोई बिडर अपना कोई बिडर जो है वो विड्रॉ करना चाहता है तो वो दे आर अलाउड कि वो विड्रॉ कर ले. अगर कोई नहीं करना चाहता तो सर उसके बाद फिर फाइनेंशियल प्रपोजल सबमिट करते हैं सर. और फिर दोनों एवेल्युएट होते हैं और जो सबसे लोवेस्ट बिड हो उससे कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो जाता है. Okay, fine, excellent. So they were the different types of bidding process. We use them in this lecture. So before going to our main topic, let us discuss what are the different roles in which you will be working in the future. So as a civil engineer, you'll be working, if you're working in the professional field, not in the academic side. So either you will be working as a consultant party, or you'll be working as a contractor, or you'll be working as a client. So if you're working with the CNW or PDA or public health, etc., so basically you will be working as a client. And if you're working as if you have your own firm,
construction firm, so you will be working as a contractor, and you are having your own firm of consultants, so you'll be working as a consultant party. Even if you don't have your own firms, you may be working with them as an employee with the consultant or contractor or client, etc. So basically, there are three. These are three main roles which will be in which you will be working in the future life. So based on these three roles, civil engineering projects can be classified as the consulting projects or the construction projects. Some projects are of consulting nature. They need some experts to design or supervise or to study the feasibility, etc. So these are the types of consulting projects. So for the consulting projects, you will need to submit the technical proposal and financial proposal. Similarly, for the design projects, you also need to submit the technical proposal and financial proposals. But when you're talking about the construction projects, these are only on the based. These are based on the cost. So lower the cost, more will be the winning chances. But the consultant projects are involved with the technical as well as the financial proposal. So in the last lecture, we have discussed bidding documents. We have discussed a list of documents in which those documents will be required for the contractor or applicant who is applying for the who is applying to participate in the tender process. So in those documents, one of them was bid evaluation criteria. So initially at the very start of the project, you must design an evaluation criteria. This is very important. So when the contractors or consultants are submitting their bids in the form of technical or financial bids, so you must have your evaluation criteria, which is already communicated to those applicants. So also this will include the eligibility criteria. The eligibility criteria may involve the income tax or sales registration. The applicant must submit their income tax certificate or sales tax registration certificate, or bid security, or they may include the bank statement or PEC registration, whether the firm is registered with the PEC or not. Remember that the PEC registration for the contractor is different than the consultant. Contractor will need to have a separate Pakistan Engineering Council registration, whereas the consultant will have another nature of the registration. Not blacklisted certificate. The firm is not blacklisted by any government organization, so they must submit a certificate that their firm is not blacklisted by any of the government organization. Blacklisting is done when a firm is awarded a project and the firm is not completing the project as per the contract. So the department usually blacklists the firm, and the result is that the firm cannot participate in the future competitions for the project. So if the firm is blacklisted, they cannot apply for this project if they have if this is in their eligibility criteria.
list of completed projects or worth of projects completed, and the details of the personnel involved in the company or firm, and the proof of salary deposit in the bank account for 6 months. So some people may add as much names of the engineers or sub-engineers in their firm, but the eligibility is requiring that you must provide the bank statement of those employees for 6 months, which will be showing that you have transferred the salary. You are regularly transferring the salary of these employees in their account every month. So this will be an evidence that they are actually working with you. Here is a sample advertisement in which the consultancy firms are invited or individual consultants are invited for the project. So I'll not read this initial first paragraph. This is mostly about the introduction of the organization and the introduction to the project, what the project is intended for. But let's start from this line. So Tuesdec therefore intends to hire the services of individual consultants, firms with relevant experience or development or other studies on selected sectors for catering their medium to long-term requirements and connect these global value chains. So for this purpose, anticipated duration of the study is 4 months. So there is mentioning the duration of the project. The firm's individuals are invited to submit their technical and financial proposals. They are requiring both the technical and financial proposals, and in which form? In 2 separate sealed envelopes. So basically it is showing that this is a 2 envelope process under the single stage 2 envelope procedure. They've also mentioned, or they have also given the reference to the procurement or bidding process by which it will be conducted as per the Public Procurement Regulatory Authority rules for Pakistan. Then they are mentioning the eligibility criteria. Eligibility criteria and detailed terms of reference are available in the bidding documents. We've discussed in the last lecture that immediately after the advertisement, you must you must have made available the bidding documents for the contractors. So they are saying that the eligibility criteria and detailed TORs are available in the bidding documents, which can be obtained on submission of a written application during office hours from Tuesday office or through email given below, and upon payment of a non-refundable fee of ₹1,000 in the name of Tuesday. And there are some other instructions which are saying that sealed bids duly completed must reach the undersigned on or before the 18th of May 2020 up to 14:00 hours. And this time is as per the Pakistan Standard Time. Tenders will be opened on the same date and time is mentioned in the presence of bidders or their authorized representative who wish to attend the Tuesday office, Lahore. जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि सबके सामने जो सब पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनके सामने फिर ये बिड्स और जो डॉक्यूमेंट्स है वो खोली जाती हैं, ओपन की जाती हैं. तो यहाँ पे मेंशन है, देखें, इन द प्रेजेंस ऑफ बिडर्स, ये बता रहे हैं कि कब खोले जाएंगे एंड अब जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आ सकते हैं.
All bids must be accompanied by a bid security of 1% of bid amount. Whatever your bid amount is, whether it is let's say 1 million or 100 million, it is 100 million bid, so you must submit 1% of the 100 million as a bid security. 1% will be 1 million. Also, the consultancy firms, individual consultants may be invited for pre-bid meeting to answer their written questions to clarify any query on bid documents before the submission of the proposal. So this is a sample advertisement. Is there any question? Okay. If another document which is containing the procurement process of Sardar Bahadur Khan Women's University, Quetta. You can get this document by clicking at this link. So I'll quickly discuss that document. This document is basically containing the bidding documents, most of the bidding documents. So this is a document which is provided after the advertisement to the contractors for their guidance. Okay, is the screen visible to you? Yes, sir. Look at this document. This is for this is a document titled Request for Proposals, and this is a procurement of laboratory items under the phase 3 under PC1. Okay, so here are some instructions, proposal instructions. So let's quickly read some random instructions. Look at this. The non-blacklist certificate confirming that the bidder has not been blacklisted by any government agency. You must submit that document. All the electronic appliances supplied by the firms should run on 220 volts. Another instruction is saying that the part or advance payment will not be entertained. The payment will be made after complete delivery of the ordered items and inspection by the authorized person. So you will be not given the advance payment or any part of advance payment. The full payment will be released after the delivery and inspection of the equipments. All the equipments should be brand new. So these are some instructions to the bidders. Then bid price, bid validity, bid earnest money. Here are this is the sequence of activities which will be involved in this procurement process. So the first activity will be the NIT, notice inviting tender, which is the advertisement. After the advertisement, issuance of tender documents from the university or download from the website of university or PEPRA. So this is the second step, and we are discussing this document, which is mentioned in the step number 2. Then bid opening session for financial proposals of responsive bidders. There is a bid opening session in which the bids are opened. Then issuance of notice of acceptance, that your bid is accepted, to the lowest evaluated bidders requesting its acceptance. You will
issue a notice of acceptance to the lowest evaluated bidder, and he will in turn uh, accept that invitation. Signing of contract agreement and issuance of supply order, and there will be a contract between these two parties, and supply order will be issued. Then delivery, inspection and acceptance of goods, and then completion of payment. The completion of payment is at the end of the procurement process. So this will be the contract agreement between these two parties. These are the some terms and conditions. What will be the payment? What will be the mode of payment? It is all payments to the supplier shall be made through crossed checks issued in the name of the supplier's name. Payment schedule, penalties liquidated in case of late delivery of goods beyond the period specified in the schedule of the requirements, and after issuance of subsequent purchase order by the consignee, penalty will be imposed as per FEPRA rules. Warranty, then the witnesses will sign, two witnesses from the supplier side and two witnesses from the purchaser side will be, they will sign the document. Then here comes the bill of quantity. These are the list of the items and this is the quantity required. Now the contractor will quote his rate, unit rate of each item at which he will provide that item, and then this unit rate multiplied with the quantity will give you the total cost of each item, and at the end you'll add up all of these costs and you'll get the total cost of the project. So the contractor will quote his rates in this table. This was a quick review of bidding documents. What can the bidding documents contain? Let's jump directly into the technical evaluation criteria. For example, if I am evaluating a technical, if I'm evaluating technical financial proposals of the applicants, so how I will evaluate them? So for evaluating a consultancy project, for example, it is a design project. First we'll discuss a design project and then we'll discuss a construction project in which only bids are involved. The lowest cost is important. So initially we'll discuss the consulting project. So this will involve both the technical proposal and the financial proposal. So you might have decided, or you must have decided an evaluation criteria before the advertisement, and you have already conveyed this evaluation criteria or communicated this evaluation criteria to the participating firms. So let's say the evaluation criteria is like, I'm giving, please concentrate now. Let's say I'm giving 80% weightage to the technical proposal and 20% weightage to the financial proposals. So out of 100, I'll give 80 marks to the technical proposal and the 20 marks for the financial proposal. So these are the distribution of marks at the global level. Global level means the technical proposal and financial proposal. So now
let's say if we talk about the technical proposal. So in the technical proposal, let's say I'm evaluating it out of 100, then I'll convert the total marks into 80. So let's say the total marks are 100. Uh, Look at this, and the experience marks are carrying. Experience is carrying 10 marks. Methodology will be evaluated in 30 marks, and experience of the proposed key staff will carry 60 marks. This is the further breakdown of the technical proposal. Then we will further divide this experience methodology or experience of the proposed key staff in further categories. For example, if I'm talking about the experience is having carrying 10 marks. So the 10 marks, 6 out of 10 will be given to the number of similar projects the firm has completed, and 4 out of 10 will be given for cost of consulting similar projects. So 6 plus 4 is equal to 10. So the experience marks will be calculated on the basis of this criteria. Then there is methodology, which is getting 30 marks. So 30 marks are further subdivided into the following categories. So this is just for an example purpose. So let's say I'm giving 3 out of 30 to the planning, then 1.5 out of 30 to the inception report, then surveying plan I'm giving 6 out of 30, then for geotechnical investigation I'm giving 6 out of 30, and so on. Then experience of the proposed key staff, which is carrying 60 marks out of 100. So let's say there are 6 key positions. For example, structural engineer, geotechnical engineer, hydraulics engineer, CAD engineer, contract specialist, and survey engineer. So each of them will carry total of 10 marks. All right. The bridge engineer will be contributing and will carry 10 marks. Geotechnical engineer will be evaluated out of 10. Hydraulics engineer will be evaluated out of 10. And similarly for these key positions, adding them all we will get 60 marks. Now this each position will be subdivided into further subdivisions for the evaluation purpose. For example, if I'm talking about the structural engineer, what is the qualification of the structural engineer? This will carry 3 out of 10 marks. Then what is the general experience of the structural engineer? This will carry 1 out of 10. What is the relevant experience of the structural engineer? 4 out of 10. Familiarity with the project area, 1 out of 10. So summing them all will give you the marks out of 10. Sorry for the miscalculation. This is not giving you, adding them all, it will not give you 10, but let's assume that it will give 10. So 10 marks for each of these key positions will be evaluated out of 10, and we will add them all, add the score obtained by each position, and we'll get marks, total marks of the experience of the proposed key staff out of 60. Now add this marks out of 60 and out of 30 for the methodology, and out of 10 for the experience, and you'll get the total marks out of 100 for the technical proposal, and you'll convert that those marks out of 80. Now please remember that the technical proposal is coupled with a fail-pass criteria. For example, you must have decided at the beginning what will be the passing marks for the technical evaluation criteria. So if a firm is not passing a technical
if a firm is not scoring that the passing marks, so that firm will be excluded from the financial evaluation of the proposals, and their financial bids will be not opened, as we have as we have discussed in the previous last class. So let's say the evaluation or the passing marks are 70. So the less than 70, the firm scoring less than 70 marks will not be entertained in the financial evaluation. Now let's talk about the financial evaluation. Let's say the financial proposal is carrying 20 marks. So the criteria is like the lowest will be getting the highest marks. The lowest cost, the firm proposing the lowest cost will get highest marks. So let's say the total marks are 20, and a firm is scoring is bidding the lowest cost of 23 million. So the 23 million, the firm quoting 23 million will get 20 marks. Now the second lowest is let's say 30 million. So how you will calculate these? How you will calculate the marks for the second lowest? The lowest, which is 23 million, divided by the firm, the cost proposed by the firm, which is the second lowest, which is 30 million. So 23, the lowest bid, divided by the second lowest, 30 million, multiplied by the marks out of which you want to evaluate the firm. So we'll evaluate them out of 20. So this will give you 15.33 marks out of 20. So in this way, you'll calculate the financial score of the firms. Then we'll create a table and organize all of these informations in that table. So in the first column, this is serial number of the firm, then the name of the firms, then the main heading is the technical proposal, then we are talking about the financial proposals, and then total score, and then the overall rank. So the evaluation of marks out of 100 for the technical proposal. So these marks are obtained from the previous evaluation criteria, which we have already discussed in the previous slides, in which experience and the individual experience of the proposed key staff, and the second criteria was this methodology. So by evaluating all of these things, we got marks for the technical evaluation out of 100. So we have mentioned those marks here in the first column. So the Alpha Engineering firm got 68 marks. The engineering experts got 73 marks. KP Engineering firm got 74 marks. Now convert, our fail pass criteria is that the firm is scoring at least 70 marks will be declared as passed, otherwise less than 70 will be declared fail. So Alpha Engineering is scoring 68 marks, so this is the no for fail, and yes for passed firms. Now convert these marks out of 80 for our origin as per our global criteria. So A multiply by 0.8, because this is already out of 100. Simply multiply it with the 0.8, so it'll get marks out of 80. So as per the technical score, the rank of these firms are Pakistan Services is on the number 1 position, the KP Engineering and Indus Engineering are on second positions, and the engineering experts is on third
Then we'll open the financial proposals and evaluate them. But keep remember that the financial proposal of the failed firm is not opened. So this is not opened. Now write the write down the respective bid cost in this column. Let's say engineering expert is quoting that they can complete this project in 12.2 million. KB Engineering is saying that the 14 million they'll take 14 million, and Indus Engineering are quoting 14.5 million, and so on. Now, how you will calculate the financial score? So the minimum out of this. These costs are 12.2 million. So 12.2 divided by the bid of the firm for which you are calculating the score. So this bid is also 12.2. So 12.2 divided by 12.2, 1, and multiply by 20. So 20 full marks, because this was the lowest. Similarly, minimum is 12.2. 12.2 divided by 14, multiply by 20, you will get 17.4. And in this way, you can calculate the rest of the financial scores. Now add this column E with column D. Financial score, which is out of 20, plus technical score, which is out of 80. So you'll get the total marks scored by the firm. And now, as per the total score, the overall ranking of these firms are: engineering experts are at the number 1 position, and then second position is given to these Pakistan services. Then third is KP Engineering, and Indus Engineering is at 4th position. So this was all about the technical and financial evaluation of the consulting projects. If you have any question, you can please ask. Otherwise, I'll discuss the evaluation of the construction projects. सर इस केस में प्रोजेक्ट विनिंग कौन सी फर्म है? अल्फा इंजीनियर, engineering experts. Overall rank as per the total score, the highest total score is of engineering experts, 78.4. So the winning party is engineering experts. Is it clear? Yes, sir. Okay. Anyone else? Yes, sir. जी, और कोई क्वेश्चन है? नो सर. सर ये इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, ये सर इनका इवेल्युएशन ऑफ मार्क्स आउट ऑफ 100 तो 73 है. ठीक. और ये पाकिस्तान सर्विसेज के 80 हैं, लेकिन रैंक इन टेक्निकल इनका 3 है और ये 1 है. सर इसका क्या मतलब है? रैंक इनका 3 है और इसका 1 है. पाकिस्तान सर्विसेज के 80 स्कोर हैं, और you can say सही 80 स्कोर हैं. Yes, then the 74, 74, 73. तो ठीक है ना. स्कोर जो है पाकिस्तान सर्विसेज के ज्यादा हैं या इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स के ज्यादा हैं स्कोर? पाकिस्तान सर्विसेज के सर 80 स्कोर है. हाँ, तो जब आप ज्यादा मार्क्स लेंगे तो आप फर्स्ट पोजीशन पे होंगे या थर्ड पोजीशन पे होंगे? तो सर इनको रैंक इन टेक्निकल तो इनका 1 है, लेकिन बाद में ओवरऑल रैंक उनका फर्स्ट है ना. अच्छा, तो अब आपने एक्सपर्टीज में तो चलें अपने मार्क्स ज्यादा कर लिए, ठीक है, आप बड़े एक्सपर्ट हैं,
बट आपका रेट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। आप जो प्रोजेक्ट मुझे करके देंगे आपके, तो जो कॉस्ट आएगा उस पे तो वो बहुत ज़्यादा है। तो मैंने दोनों चीज़ों को देखना है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को देखना है, तो इसलिए मैं क्या करता हूँ कि 80% जो है उसको टेक्निकल प्रपोजल को मार्क्स दे देता हूँ और 20% जो है फाइनेंशियल प्रपोजल को। अब आप इसमें देखें कि टेक्निकल स्कोर में पाकिस्तान सर्विसेज के पाकिस्तान सर्विसेज का स्कोर जो है, अगर मैं देखूं आउट ऑफ 80 में चेक करता हूँ, ये आउट ऑफ 80 जो लिखे हैं कॉलम बी में, दिस इज 64। और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स का स्कोर है 58। तो यस सर। पाकिस्तान सर्विसेज फिलहाल आगे है और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स पीछे है, ठीक है। बट जब मैं देखता हूँ फाइनेंशियल स्कोर को, तो पाकिस्तान सर्विसेज का स्कोर जो है 13.6 है और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स का स्कोर जो है 20 है। ये क्यों 20 है? कि यस सर। पाकिस्तान सर्विसेज ने पैसे बहुत ज्यादा मांगे थे, उन्होंने जो था अपना बिड उनकी बहुत ज्यादा थी और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स की बिड कम थी। तो अब जब मैं टोटल मार्क्स कैलकुलेट करता हूँ दिस यस सर। ओके 20 प्लस 80, तो इसलिए वो फिर पोजीशंस आगे पीछे हो जाती हैं। ऑलराइट, एक्सक्यूज मी सर। ओके सर। सर जी। सर ये अगर पाकिस्तान सर्विसेज फॉर एग्जांपल 18 की बजाय ये 16 मिलियन में अगर ये प्रोजेक्ट करते हैं ना, तो फिर तो ये रैंक 1 पे आ जाते हैं। अगर 18 की बजाय 16 पे करते हैं, आपने कैलकुलेशन की है? यस सर, ये रैंक 1 पे आ जाएंगे, मतलब 79 आ जाता है इनका। लेकिन इसमें इस केस में तो मतलब इनका ज्यादा आ रहा है, लेकिन हम इकोनॉमिकल हमें तो ज्यादा वो इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स पढ़ रहे हैं तो वो रैंक 2 पे आ रहे हैं, तो फिर हम इस केस में कौन सा चूज करेंगे? नहीं नहीं नहीं, आप जरा अपना स्टेटमेंट दोबारा रिपीट करें। आपने पाकिस्तान सर्विसेज के कैलकुलेट किए हैं और वो रैंक 1 पे आ रहे हैं? सर अगर इस पूरी कैलकुलेशन में अगर हम पाकिस्तान सर्विसेज को 18 से हटा के 16 मिलियन पे करते हैं ना, ठीक है। तो फिर रैंक 1 पे पाकिस्तान सर्विसेज आ जाते हैं और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स जो है उनका 78 ही है, फॉर एग्जांपल 12 पे वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वो तो रैंक 2 पे आ जाते हैं। रैंक 2 पे आ जाते हैं, ठीक है। तो इस केस में मतलब इतना फर्क नहीं आ रहा, लेकिन इकोनॉमी में बहुत फर्क आ रहा है, मतलब 4 मिलियन का फर्क आ रहा है, तो फिर हम कौन सा चूज करें? देखें, अगर 2 रुपए का भी फर्क है ना, अगर पाकिस्तान सर्विसेज और इंजीनियरिंग एक्सपर्ट्स की स्कोर में, चले इसकी बात नहीं करते फाइनेंशियल, इनके पॉइंट्स की बात करें, अगर एक स्कोर का भी फर्क है तो जो जिसका ज्यादा है तो वो कॉन्ट्रैक्ट विन करेगा। ये ओपन कंपटीशन है। अगर 100 रुपए या 2 रुपए, अगर मिलियन में 100 रुपए क्या चीज है, कुछ भी नहीं। चलिए 100 रुपए छोड़े, 2 रुपए का भी फर्क है और 2 रुपए की वजह से इनका स्कोर आगे पीछे हो रहा है, तो आप जो है उसको देखेंगे, इनके फाइनल पोजीशन को देखेंगे किसका स्कोर ज्यादा है। कि चाहे अगर इसका 77.56 है और दूसरी का 77.57, 77.57 वाला जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जीतेगा, बिकॉज दिस एन ओपन कंपटीशन। ओके सर। ठीक है। सर अगर एक प्राइवेट इन्वेस्टर हो तो मतलब वो अपनी चॉइस से फिर चूज कर सकते हैं? प्राइवेट इन्वेस्टर हो तो वो तो उसकी अपनी मर्जी है। प्राइवेट जो है वो तो जैसे कि आप अपने लिए कुछ करें, आप अपने लिए कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, प्लाजा बना रहे हैं, वो तो आपकी अपनी मर्जी है। जिसको प्रोजेक्ट देते हैं, किसको नहीं देते, आपको क्या दोस्त, अपने दोस्त को देते हैं, अपने भाई को देते हैं, वो तो मसला ही नहीं है उसमें कुछ। ओके सर। ओके, थैंक यू। So the bids of the contractors are generally evaluated on the cost basis, and the criteria is the lowest cost for the responsible bid. It normally involves the item-wise rate analysis, and engineer's estimate is given,
and most of the time the contractor will have to uh, quote his rate in the form of percentage below or above the engineer estimate. So, do you know what is engineer estimate? इंजीनियर एस्टिमेट क्या होता है? सैलरी सर उसको जो दी जाती। नहीं, in the terms of the projects and the government projects, the engineer estimate is that estimate which is prepared by the client. अब क्लाइंट ब्लाइंडली तो उस पे नहीं जा सकता ना, तो क्लाइंट ने क्या किया होता है कि ऑलरेडी एक अपने इंजीनियर से एक प्रोजेक्ट का एस्टिमेट बनाया होता है कि इस प्रोजेक्ट पे इतना खर्च आएगा एस्टिमेट। अब जो है कॉन्ट्रैक्टर ने क्या करना होता है कि लेट्स से क्लाइंट कहता है कि एज पर द इंजीनियर एस्टिमेट और एज पर द माय इंजीनियर the building will cost 100 rupees. Now the contractor will say, okay, uh, if you're saying that this building will cost 100 rupees, I can I can construct this building for you in 90 rupees. Another contractor is saying that I can construct this building in 95 rupees. Or you can say 5% below the engineer estimate, or the first one was saying that I can construct this building and 10% below the engineer estimate. And there is another contractor who is claiming that I can construct this building and 5% above the engineer estimate, which means if the engineer estimate is 100 rupees, so he'll take 105 rupees. Then the lowest bid will get the project. But to maintain the quality of the project, you can put a limit on the percentage below at which a contractor can bid. For example, this is the engineer estimate is 100, so and a new contractor is saying that I can construct this building and 40% below the engineer estimate. So how is this possible? A building is costing 100 rupees और वो दूसरा जो इंजीनियर है वो कह रहा है मैं 40% बिलो जरा जाऊंगा, it means कि वो 60 rupees में बना के देगा. So how it is possible? So definitely he'll compromise on the quality of the project. So you can also put a limit on the percentage below of the engineer estimate. So first, let's see an advertisement of the construction project. This is an advertisement from the CNW department, and this is based upon the single stage single envelope. The previous one was single stage 2 envelope, but this is based upon the single stage single envelope because this will not involve any technical proposal. So CNW department, Sawabi division, government of KPK, and the bidders should be registered with Pakistan Engineering Council in relevant category and field of specialization, and enlisted with the CNW department, and should give adequate financial soundness and relevant experience, personnel capabilities, required equipment, and others as included in the IGP. So, what is the project? This is the project. So, repair of the public libraries in Khyber Pakhtunkhwa, construction of 100 examination halls, GHS Maneri, Bada. The required category of the firm is C6 and above, C6 and above, C6 and above. This is the eligibility criteria. Do you know the construction firms? The construction firms are categorized in 6 categories as per the Pakistan Engineering Council. So the C6 category is the lowest category, and the C1 category is the top category or top rank firm. The C6 category can undertake a project of low cost, and the C1 firm can take mega projects as well.
So this is all about the cost of the projects a firm can undertake. What will be the bid security? 2% of the bid cost. Whatever the cost you have bid. For example, you are saying that I can do this project in 100 rupees, so you will submit 2 rupees as a bid security. Then there is a period of completion, last date of submission, and date of opening and time. There are some instructions for the submission of bid security. Original bid security in the shape of call deposit in the name of executive engineers in the division will accompany the bid. The bidders are required to send their bids through courier in duplicate in separate envelopes clearly marked as original or original and duplicate. The original shall be sent to the executive engineer, CNW division, Swabi, and the duplicate to the superintending engineer, CNW Circle, Madan. Both the original and duplicate bids shall reach the concerned office before closing date and time. Then there are some instructions to the bidders. The bidders should provide price BOQ bid security in the shape of call deposit, enlistment order. Enlistment is like in the government departments like PDA, CNW, the contractors can register themselves in these departments so that if there are any project in these departments, these firms will be preferred. So this is basically called as enlistment. So any contractor can enlist himself with the CNW or PDA or public health, etc. So enlistment order of CNW, whether the firm is enlisted with the CNW or not. So if it is enlisted, so where is the attach a photocopy of the enlistment order. Then the renewal of the registration comprise NIC, Pakistan Engineering Council registration copy, Form H, documents showing general capabilities, financial soundness, general relevant experience, record, personnel, capabilities, equipment details and availability, and income tax or NTN certificates. This para is important, the third para. Please read and try to understand. Please read this paragraph and then I'll ask you people to explain this paragraph. जी कुछ समझ आई? यस सर। क्या कह रही है? सर ये कह रहे हैं कि अगर सक्सेसफुल बिड जो हो जाती है और वो इंजीनियर एस्टिमेट के 10% से कम हो तो बिडर जो है सर वो या तो अपनी परफॉर्मेंस की गारंटी और रिकॉर्ड्स रखेगा या जो है कंपनी को ए रेटिंग होनी चाहिए PACRA और GCR में, या इसके पास बैंक में जो है वो 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट 21 दिनों के अंदर अंदर होनी चाहिए। और सर अगर नहीं हुआ बिड जो है वो उसके 10% जो इंजीनियर एस्टिमेट जो है उसके ज्यादा हुआ तो द बिडर शैल प्रोवाइड बैंक गारंटी एज एन एडिशनल सिक्योरिटी। तो सर
ये जो है वो एडिशनल सिक्योरिटी रखेगा बैंक की 14 दिनों के अंदर अंदर। कितनी रखेगा ये भी बता दें। सर ये नहीं पता सर। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ 10% सर। नहीं, चले मैं बताता हूँ। स्टार्ट तो काफी अच्छा एक्सप्लेन किया आपने। अगर अब यहाँ पे क्वालिटी मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर बिलो जा रहा है तो अ, वो जो है अपनी परफॉर्मेंस गारंटी देगा। अगर जो है 10% तक बिलो है, फॉर एग्जांपल 95 5% बिलो है, 3% बिलो है, 7% बिलो है, तो इन दैट केस तो या तो वो इंश्योरेंस करवा के देगा प्रोजेक्ट की, तो सारा खर्चा जो है उसका होगा, और या बैंक गारंटी देगा 10% की। ठीक है, 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट विद इन 20 days of the acceptance letter। लेकिन अगर 10% से भी ज्यादा बिलो है, मतलब 15% है, 20% बिलो चला गया है, इस केस में क्या होगा कि वो बैंक गारंटी देगा, और कितनी देगा, नॉट 10% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट, बट कितनी देगा, फॉर एग्जांपल कितनी देगा, चले इक्वल टू द अमाउंट ऑफ द डिफरेंस ऑफ द कोटेड बिड एंड द इंजीनियर एस्टिमेट टू द फर्म ऑफ द बिड, फर्म ऑफ द बिड। कितनी होगी, फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर वो 20% बिल हो गया है, अगर इंजीनियर एस्टिमेट 100 रुपीज था, वो कहता है कि मैं 80 रुपीज में करके दूंगा, तो 20 का डिफरेंस है ना, तो 20 रुपीज की वो बैंक सिक्योरिटी देगा, बैंक सिक्योरिटी एज ए। तो वो सारे जो लेट्स से अगर 100 मिलियन का प्रोजेक्ट है, और वो कहता है मैं आपको 80 मिलियन में करके दूंगा, इंजीनियर एस्टिमेट जो था 100 मिलियन था, ये कहता है 80 मिलियन में करके दूंगा, तो 20 मिलियन जो है वो प्रोजेक्ट के स्टार्ट में ही वो 20 मिलियन अमाउंट बैंक में सबमिट कर देगा। अगर उसने प्रोजेक्ट में कोई गड़बड़ की तो वो उसके पैसे वहां से कट जाएंगे। The performance bond or bank guarantee, whichever the case is not provided by the bidder in the required period, then offer will be given to the next lowest bidder, and so on, and the bid security of the bidder will be forfeited। अगर उसने जो गिवन टाइम है उसने बैंक सिक्योरिटी सबमिट नहीं की, तो क्या होगा कि ऑफर जो है नेक्स्ट लोएस्ट को दे दी जाएगी, और उसने जो स्टार्ट में 2% बिड सिक्योरिटी सबमिट की थी वो जो है उसको वापस नहीं मिलेगी। ठीक है, क्लियर है। यस सर। तो अब समझ आई कि ये 2% सिक्योरिटी बिड सिक्योरिटी डिपार्टमेंट क्यों रखता है आपके पास, या 1% बिड सिक्योरिटी क्यों रखता है। बेसिकली ये इसलिए रखता है कि इसमें जो नॉन सीरियस कॉन्ट्रैक्टर्स हैं वो पार्टिसिपेट ना करें। अब एक फर्म है वो 20% बिलो रेट कोट कर रही है, अब जब उनको प्रोजेक्ट अवार्ड हुए और तो फिर वो पीछे हट जाते हैं कि यार ये तो बहुत कम रेट हमने कोट किया, तो हमें अवार्ड हो गया, तो हम इस रेट पे तो मुझे कोई फायदा ही नहीं होगा, मैं नहीं कर सकता। तो अगर ये सारी चीजें आपको पहले सोचनी चाहिए थी, और सोच के फिर 20% बिलो जानी चाहिए, लेकिन आपने बगैर सोच समझे नॉन सीरियस बिहेवियर शो किया है, एंड यू हैव अप्लाइड फॉर द प्रोजेक्ट, एंड आपने उसका काम जो है आपकी वजह से वो जो प्रोसेस है वो डिले होगा। तो इस वजह से आपने जो स्टार्ट में बैंक सिक्योरिटी सबमिट की थी, सॉरी जो 2% बिड सिक्योरिटी सबमिट की थी, वो आपकी जब्त हो गई, आपको वापस नहीं मिली। अगर ऐसा ना होता, ये सिक्योरिटी वगैरह ना रखनी होती, तो फिर हर कोई आ जाता, वैसे जो है अनरियलिस्टिक बिड्स कोट करके जब उनको अवार्ड कर दिया जाता प्रोजेक्ट, तो फिर वो पीछे हट जाते। तो इस चीज को कम करने के लिए ऐसा किया जाता है। If the last bullet देखें 12 number point, if the evaluated bid cost of
two or more than two bids are same, then the successful bid will be declared through draw. फिर जो है draw through अगर same है. Then this is the bid evaluation of contractor. This is very simple. यहाँ पे serial number, then the list of items of work, clearing, grubbing, excavation of rocks, concreting in 3000 psi, and so on. This is the quantity of work required. This is engineer estimate. This is the rates quoted by the MSABC, and this is the MSAC construction. So the engineer estimate is saying that these are the unit costs of these items, and this is the total cost of each item, and this is the total cost of the project. 111.283. MSBC ABC is quoting that I can do this project in 111.887 million, which is 0.54% above the engineer estimate. But the MSAC construction is saying that I can do this project in these rates, and the total cost of the project will be 98.429 million, and this is something minus 11.55%, or you can say 11.55% below the engineer estimate. How this is calculated? Simply engineer estimate minus 98.429. This will give you the difference. Then divide the difference with the engineer estimate and multiply it with the 100. So you'll get the 11.55. So this is saying that I can do this project in 11.55 million, 11.5% below the engineer estimate. So this firm will get the project, and they will have to then submit all of the bank securities as per the instructions given in this advertisement. Is it clear? Is there any question? Yes, sir. Thank you, sir. No, sir. No, sir, no question. Sir, Please. सर एक फर्म एट अ टाइम कंस्ट्रक्टर और कंसल्टेंट हो सकती है? ये हो सकती है, लेकिन उनकी रजिस्ट्रेशन अलग अलग होती है, फर्म नहीं होती. देखें, आप एक रजिस्ट्रेशन पे जो कंस्ट्रक्टर की रजिस्ट्रेशन है वो अलग है पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की तरफ से, और कंसल्टेंट की रजिस्ट्रेशन अलग है. तो अब अगर आप कंसल्टेंट फर्म ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, और कॉन्ट्रैक्टर के लिए आपको अलग रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी. बट एक फर्म हो सकती है दोनों अलग अलग रजिस्ट्रेशंस पे? एक फर्म हो सकती है दोनों. अब ये थोड़ी सी कंफ्यूजन है इसमें. आया कि एक बंदा, लेट्स से अगर वो फर्म एक बंदे के नाम है, ठीक है, तो एक बंदा एट टाइम कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस और कंसल्टेंट का लाइसेंस रख सकता है कि नहीं, ये चीज़ थोड़ी सी कंफर्म करनी पड़ेगी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट से. अगर ऐसा है तो फिर तो कोई इशू नहीं. अगर ऐसा है कि एक बंदा एट अ टाइम या तो कॉन्ट्रैक्टर होगा या कंसल्टेंट होगा, तो फिर ये हो सकता है कि आपने फर्म ओपन की हुई है तो कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस आप अपने नाम पे लेंगे, एंड कंसल्टेंट का लाइसेंस आप अपने जो पार्टनर है वो भी अगर इंजीनियर है तो उसके नाम पे ले लें. तो वो आपकी फर्म जो है एट अ टाइम दोनों काम कर सकती है. सही हो गया सर. लेकिन ये चीज़ कंफर्म करनी पड़ेगी पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल की वेबसाइट से कि एट अ टाइम एक बंदा जो है, एक बंदे के पास दोनों लाइसेंस हो सकते हैं कि नहीं. ये चीज़ थोड़ी सी मुझे क्लियर नहीं. Any other question? सर ये ठेकेदारी का जो लाइसेंस होता है, ये C5, C6, C12 सर जो, ठीक.
तो सर इसमें जो है ये आम पर्सन के लिए जो है कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है और इसी तरह सर के उसके साथ इतनी इतनी मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है सारी चीज़ों की सर। अगर वो जी अवेलेबल हो तो उसके मुताबिक उसको C1 C2 और अप टू C6 ये सर बिल्कुल ऐसा ही। उसको जो है दिए जाते हैं। सही है जैसे सर। जैसे आप ऊपर जाते हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स आपको जाती है। यस सर C1 और C AA सर तो सर इंजीनियर के लिए इसमें तो कुछ इस तरह कुछ मैं सुना है सर मुझे कंफर्म पता नहीं है। उनको लिए इस तरह कुछ है सर कि उसको बगैर कुछ जो ये इंस्ट्रूमेंट और या कुछ रिक्वायरमेंट्स उसके बगैर उसको जो है C5 है मेरे ख्याल में सर के C6 उसको जो है दिया जाता है जी सर इस तरह ऐसा कुछ है, है कि नहीं। ऐसा है, बिल्कुल है। नॉर्मली जब अगर आप खुद ही फर्म के ऑनर हैं तो आपको एक तो ये है कि फर्म किसी और के नाम पे है, लेकिन जो फर्म का ऑनर है वो खुद अगर इंजीनियर है तो फिर जो है उसको वो डायरेक्टली आई थिंक C5 ओपन कर सकता है या C4 डायरेक्टली ओपन कर सकता है। बट अगर नहीं है ऑनर, अगर इंजीनियर नहीं है, उसने सिर्फ इंजीनियर हायर किया हुआ है, तो वो फिर अगर उसने C6 से स्टार्ट लिया है तो वो फिर कुछ प्रोजेक्ट्स करेगा C6 फर्म में कैटेगरी में, फिर थोड़ा सा एक्सपीरियंस गेन होगा, उसके बाद वो 6 से 5 के लिए अप्लाई कर सकता है या हायर फर्म के लिए अप्लाई कर सकता है, तो डायरेक्टली नहीं कर सकते। बट अगर वो इंजीनियर खुद ऑनर है तो फिर वो उसको थोड़ी सी रिलैक्सेशन है, वो डायरेक्टली हायर फर्म के लिए अप्लाई कर सकता है। आई थिंक C5 कैटेगरी के लिए या C4 के लिए C5 या C4 है, वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकता और सर ये कंसल्टेंट का काम सिर्फ ये होता है कि सर उसको कुछ जो प्लान वगैरह होते हैं सर जो उसके नक्शे वगैरह जो भी बने होते हैं ना सर वो उसको प्रोवाइड करते हैं प्लान्स वगैरह जो थे बिल्डिंग के कि नहीं है। कंसल्टेंट का सर ये। कंसल्टेंट्स बेसिकली मुख्तलिफ रोल प्ले कर सकते हैं। दे कैन बी द डिजाइनर्स, preparing the structure, designing the structure and the architecture aspect of the building. They can be third. They can be playing the role of third party, which is involved in the supervision of the project. तो डिजाइन करके वो सुपरवाइज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब एक सिंपल डिपार्टमेंट्स और उनकी बातों में नहीं जाते, सिंपल बात करते हैं। आप अपने लिए घर बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप होते हैं जो है बिजी होते हैं, आप इस्लामाबाद में होते हैं, आप शहर में घर बन रहे हैं, अपने एक ठेकेदार लिया हुआ है, ठीक है, उसको वो प्रोजेक्ट दिया हुआ है कि आप मेरे लिए घर बना लो, पूरा प्रोजेक्ट उसको दिया हुआ है। अब उसको सुपरवाइज कौन करेगा? आप तो उधर होते हो। आप क्या करोगे? एक तीसरा बंदा हायर कर लोगे, थर्ड पार्टी, एक और बंदा हायर कर लो विच इज सुपरवाइजर और वट एवर, आप उसका नाम दे दो। आप उसको पैसे दोगे, मंथली सैलरी दोगे और उसको कहोगे कि इस ठेकेदार पे जो है नजर रखो कि क्वालिटी वर्क करे और क्वालिटी खराब ना करे, ठीक काम करे एक्सेट्रा। तो जो ये तीसरा बंदा था दिस वाज कंसल्टेंट। तो इसी तरह गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में भी होता है, अगर कॉस्ट एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो कंसल्टेंट्स को इन्वॉल्व करना पड़ता है फॉर सुपरविजन, क्योंकि डिपार्टमेंट फिर उसकी डिपार्टमेंट जो है वो एज अ क्लाइंट है, तो क्लाइंट खुद ही उसकी सुपरविजन नहीं कर सकता। अगर छोटा प्रोजेक्ट है तो क्लाइंट का अपना इंजीनियर जाकर वो मॉनिटर कर लेगा, लेकिन अगर बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है तो कंसल्टेंट्स इन्वॉल्व होंगे और कंसल्टेंट्स जो है कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर सुपरवाइज करेंगे। तो ये रोल तो भी सर होता कंसल्टेंट तो कंसल्टेंट सर डिजाइनिंग भी कर सकते हैं और उसके साथ सुपरविजन भी कर है। सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और और सर कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं हो सकता ना कॉन्ट्रैक्टर कंसल्टेंसी जिस तरह सिर्फ और सर। सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ और सिर्फ जो है वो कंस्ट्रक्ट कर सकता है चीज को, एग्जीक्यूशन जो है काम होता नहीं सर कंसल्टेंट जो है कंसल्टेंसी जो बनाते हैं ना सर कंसल्टेंसी वाले जो है सर वो कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। है। कंसल्टेंसी वाले कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। अब वही मैं कह रहा हूँ कि अब अगर उनके पास लाइसेंस है, आप आप जो फर्म है वो 2-3 बंदों की पार्टनरशिप में है और आप एक बंदे के पास कंसल्टेंट्स का लाइसेंस है और दूसरे के पास कॉन्ट्रैक्टर का लाइसेंस है, तो अगर लाइसेंस है तो फिर हो सकता है। नहीं सर इस तरह स्पार्क वाले सर वो बेसिकली कंस्ट्रक्शन भी कर दे और ये इस्लामिया कॉलेज में सर जो प्रोजेक्ट बन रहा है ये कंस्ट्रक्शन जो हो रही है तो सर वो उसमें जो है एज ए सुपरवाइजर काम कर रहे हैं
ये इस्लामिक कॉलेज में जो बन रहे हैं सर बिल्डिंग्स ये वगैरह। कौन सी फॉर्म है? नेस्पाक सर। नहीं, कंस्ट्रक्शन क्या कर रहे हैं स्पार्क वाले? स्पार्क वाले तो नहीं करते। सर वो सिर्फ सुपरविजन करते हैं सर। स्पार्क वाले सुपरविजन करते हैं, डिजाइन करते हैं, सुपरविजन करते हैं। अच्छा सर। एनीवन एल्स? बस सर ये लेक्चर शेयर कर दे फिर। नहीं, अभी लेक्चर खत्म नहीं हुआ, अभी एक पार्ट रहता है इसका। So this was all about the evaluation of documents or technical or financial proposals. Now हमने प्री क्वालिफिकेशन डिस्कस किया था। नो सर। तो ये पता है व्हाट इज प्री क्वालिफिकेशन? नो सर। इसको क्विकली खत्म करते हैं फिर लेक्चर कंक्लूड करते हैं। बेसिकली जब जब प्रोजेक्ट जो है काफी बड़ा होता है, मेगा प्रोजेक्ट होता है, when the project cost or the project nature is very big, so to avoid the incompetent construction firms or non-serious construction firms from in participating in the bidding process, we conduct the pre-qualification process. मेन पर्पस ये है, आप जब प्री क्वालिफिकेशन करते हैं कंस्ट्रक्टर्स की, तो उसमें से जो इनकम्पिटेंट फर्म्स हैं, जो न्यू फर्म्स हैं, जो प्रोजेक्ट नहीं कर सकती, तो वो उसमें से निकल जाती है। अगर ये आप नहीं करते तो होगा क्या कि बहुत मेगा प्रोजेक्ट है और बहुत सेंसिटिव प्रोजेक्ट है विच नीड्स experts for executing that project, तो वो आप एडवर्टाइज करते हैं टेंडर फॉर्म में, तो ओपन कंपटीशन में जाते हैं, तो उसमें होगा ये कि जो न्यू फर्म्स हैं वो बहुत कम रेट्स कोट करेंगी, एंड बाय रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको उनको प्रोजेक्ट में अवॉर्ड करना पड़ेगा, एंड एट द एंड आपको क्वालिटी खराब मिलेगी उस प्रोजेक्ट जिसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए आप क्या करते हैं कि प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस कंडक्ट करते हैं। इसमें होता ही है कि जो फर्म्स हैं वो स्टार्ट में अपने रेट्स कोट नहीं करती, वो अपने रेट्स कोट नहीं करती, बल्कि अपना एक्सपीरियंस, अपनी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, अपनी इक्विपमेंट्स के बारे में बताती हैं, सारी चीजें बताती हैं, अपनी कंपनी प्रोफाइल वगैरह। अब हर एक चीज को आपने स्कोर दिया होगा कि किस चीज को मैंने कितना स्कोर दिया, कितने मार्क्स दिए, तो उस बेस पे आप हर एक फर्म को इवेल्युएट करते हैं और उनको मार्क्स देते हैं। फिर जो फर्म्स जिन फर्म्स के मार्क्स, पासिंग मार्क्स ज्यादा होते हैं, तो सिर्फ उन फर्म्स को आप इनवाइट करते हैं कि सिर्फ आप लोग आए और अपने रेट्स कोट करें। जो जो प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस में फेल हो जाती हैं, तो उन फर्म्स को आप इनवाइट ही नहीं करते। इससे होता ही है कि जो क्वालिटी फर्म्स हैं सिर्फ वो ही रह जाती हैं व्हेन कोटिंग द रेट्स और इन द बिडिंग प्रोसेस। सो दिस इज द मेन बेनिफिट ऑफ द प्री क्वालिफिकेशन प्रोसेस। समझ आइए? यस सर। Okay. So how you will conduct the pre-qualification process for the constructors? So for this purpose, this document is available for on the Pakistan Engineering Council website. You can download this document, or I have already uploaded this document in the Google Classroom. The document आप लोग खुद भी
देख लें, डिटेल से पढ़ लें, इसमें कुछ एडवांटेजेस भी हैं प्री क्वालिफिकेशन की। प्री क्वालिफिकेशन होता क्या है वो भी डिस्क्राइब किया गया है। उसका क्राइटेरिया क्या है, क्राइटेरिया मैं डिस्कस कर देता हूँ यहाँ पे। क्राइटेरिया के अलावा इन्होंने आप जब एडवर्टाइजमेंट करेंगे प्री क्वालिफिकेशन के लिए तो उसका फॉर्मेट क्या होना चाहिए वो भी बता दिया गया है इसमें। देखें, ये फिर जो है इनविटेशन फॉर प्री क्वालिफिकेशन है। इस फॉर्म में आपकी जो ब्लैंक छोड़ी हुई है, इन्होंने ब्लैंक स्पेस छोड़ा, यहाँ पे आप अपनी इंफॉर्मेशन, डिपार्टमेंट की इंफॉर्मेशन, प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन सारी लिखेंगे। फिर जो है इंस्ट्रक्शंस टू द एप्लीकेंट्स, ये भी इन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है, टेम्पलेट। फिर क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, तो जेनेरिक जो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया है दैट इज टोटल मार्क्स जो है आपके 100 हैं और 100 में फाइनेंशियल साउंडनेस आपकी 30 मार्क्स कैरी करें। The experience record is carrying 35 marks, personnel capabilities are carrying 15 marks, and equipment capabilities are carrying 20 marks. Let's now further subdivide each of these category. So if I'm talking about the number 2 experience record, so general experience, this was carrying 35 marks. So these 35 marks are further divided into 4 categories. The first one is the projects of similar nature and complexity completed over last 10 years. Similar projects जितने किए होंगे पिछले 10 सालों में वो 15 मार्क्स उनको अलाउड होंगे। Project of similar nature and complexity in hand, अभी जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसको आप 10 मार्क्स देंगे। Experience related to the project but not basic part 5 marks. Status of investment with government organization and other agencies, जब भी इन्वेस्टमेंट की बात की थी मैंने, तो अगर एक फर्म एक डिपार्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट है तो 1 मार्क, 2 डिपार्टमेंट के साथ इन्वेस्टमेंट है तो 2 मार्क्स, 5 के साथ है तो 5, अगर 5 से ज़्यादा है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे। ये भी डिस्ट्रीब्यूशन आप देख रहे हैं। इसके बाद जो है आपका आता है पर्सनल कैपेबिलिटीज। पर्सनल कैपेबिलिटीज इज कैरिंग 3 मार्क्स। दिस इज पर्सनल कैपेबिलिटी। इसमें आपके नंबर ऑफ इंजीनियर्स काउंट हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ इंजीनियर्स जो हैं बी ग्रेजुएट इंजीनियर्स, जैसे कि आप लोग कर रहे हैं ग्रेजुएशन, तो अगर 6 उसके आपके 6 स्कोर हैं, तो जो एक्सपीरियंस ऑफ द इंजीनियर्स है उसके आपके पास 3 स्कोर है। Similarly, number of diploma holder engineers in the employment, number of engineers is having 4 marks and experience is carrying 2 marks. And equipment capabilities, आपके पास machineries कौन सी हैं, that will carry 20 marks. And then the financial, this is the financial position. This will carry a total of 30 marks, and this will include available bank credit 5 marks, working capital in last 3 years 5 marks, registration with the income tax department 5 marks, litigation history where decision went against the मीन्स कि अगर किसी प्रोजेक्ट के दौरान आपको कोई केस हो गया था कोर्ट में कि प्रोजेक्ट किसी इश्यू की वजह से और उस कोर्ट में डिसीजन आपके अगेंस्ट आया, उस केस में आपको ये 5 मार्क्स नहीं मिले। ठीक है, ब्लैक लिस्टिंग, कोई ब्लैक लिस्टिंग है तो आपको ये 5 मार्क्स नहीं मिले। वैलिड लाइसेंस फॉर द अदर रिलेटेड आइटम्स ऑफ वर्क, आपको 5 मार्क्स इस बात पे। ठीक है, ये टोटल 30। अभी आप मार्क्स कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो इसके फॉर्मूलाज भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं इस हाईलाइटेड पोर्शन। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जनरल एक्सपीरियंस की बात करूं, if I'm talking about the general experience and if I'm talking about the projects of similar nature and complexity completed in last 10 years, ठीक है,
पिछले 10 सालों में आपने सिमिलर नेचर के कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए? अच्छा, प्रोजेक्ट की मिनिमम रिक्वायरमेंट बता दी कि अगर बिल्डिंग प्रोजेक्ट है तो कम से कम इस काउंटिंग में शामिल होने के लिए उसको 8 स्टोरी से कम नहीं होना चाहिए। कम से कम 8 स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो total in total it will carry 15 marks. Now here are the formulas. 12 marks are given if the contractor has completed at least 3 projects of similar nature in last 10 years. अगर कम से कम 3 प्रोजेक्ट्स किए हुए हैं इस नेचर के, सिमिलर नेचर के, उसको 12 मार्क्स दिए जाएंगे। If less than 3 projects completed, use the following weighting. 12 into A by 3, where A is the number of projects completed. For example, अगर 2 projects किए तो 2 by 3 into 12. अगर 3 से ज़्यादा किए, for more than 3 projects but less than 6 projects completed, use the following weightage. 12 plus A by 6. A is the number of projects completed. Let's say 4 है तो 4 by 6 into 3 plus 12. ये आपका स्कोर हो जाएगा। अगर 6 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स किए हैं तो आपको 15 out of 15 marks. Similarly, projects of similar nature in hand, तो उसके लिए आपके 10 marks है और similar marks आप formulas भी given है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। Electrical works carried out, तो उसकी भी डिस्ट्रीब्यूशन दी है कि 4 marks कब मिलेंगे, 3 और 4 टोटल मार्क्स कितने हैं, 5 हैं, तो 4 कब मिलेंगे एंड उससे कम मार्क्स कब मिलेंगे, सारी डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे बताई गई है। जब हम पर्सनल कैपेबिलिटीज की बात करें तो आपके पास अगर बीएससी इंजीनियर्स हैं तो registered with Pakistan Engineering Council. This is important. BSc engineers registered with the Pakistan Engineering Council. तो 9 मार्क्स हैं टोटल इसके, जिसमें एक्सपीरियंस के 3 मार्क्स हैं और स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियर्स के 6 मार्क्स हैं। अब इनको फर्दर कैसे डिवाइड किया गया है कि the experience is having 3 marks. So 3 marks will be given if the individual experience of at least 4 numbers of BSc engineers is equal to or above than the 15 years. 15 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस वाले अगर कम से कम 4 बंदे हैं आपके पास, 4 इंजीनियर्स हैं, आपको 3 out of 3 मार्क्स मिलेंगे। अगर लेस देन 4 हैं 15 साल से ज़्यादा के एक्सपीरियंस वाले, तो आप कैलकुलेशन के लिए ये फॉर्मूला जो है, strength of engineers is carrying 6 marks. So 6 marks will be given if the total number of engineers registered with PC are 15 numbers or above. अगर 15 से ज़्यादा इंजीनियर्स हैं आपके पास तो इस केस में आपको 6 out of 6 marks मिलेंगे। If the number of engineers are less than 15, so the marks will be calculated as per this formula. Similarly, these formulas can be used for the associate engineers or diploma holders. इनके एक्सपीरियंस के 2 मार्क्स हैं और स्ट्रेंथ ऑफ इंजीनियर्स के 4 मार्क्स। Then this is equipment capability. जब एक प्रोजेक्ट लॉन्च होता है तो उसमें क्लाइंट बता देता है कि आपके पास कम से कम इतने एक्सकेवेटर्स होने चाहिए, इतने मिक्सर्स होने चाहिए, इतने बैचिंग प्लांट्स होने चाहिए। तो सारी जो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं वो क्लाइंट की तरफ से दी जाती हैं कि आपके पास कम से कम 5 एक्सकेवेटर्स होने चाहिए, 6 एक्सकेवेटर्स होने चाहिए। तो ये जो इक्विपमेंट कैपेबिलिटीज के जो मार्क्स हैं वो इस बेस पे कैलकुलेट किए जाते हैं। आपको ये मशीनरी आपके पास है, ठीक है, और हर एक मशीनरी को हमने लेट्स से 10 मार्क्स असाइन किए। हर एक मशीनरी को 10 मार्क्स असाइन हो गए। तो फॉर एग्जांपल बैचिंग प्लांट के बारे में बात करें
तो कहता है कि 8 marks for each equipment are given if the contractor meets the minimum requirement given in the pre-qualification document for each item. So if the client is saying that we need the contractor must have 5 batching plants and the contractor is having 5 batching plants, तो इस केस में आपको 8 मार्क्स दिए जाएंगे आउट ऑफ 10 बिकॉज यू आर मीटिंग दी मिनिमम रिक्वायरमेंट. अगर आपके पास मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है विच इज 5 बैचिंग प्लांट्स, आपके पास 7 बैचिंग प्लांट्स हैं, तो आपको 10 आउट ऑफ 10 मिलेंगे. ऑलराइट, अगर आपके पास जो नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स हैं वो लेस देन द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर उस केस में आप ये फार्मूला यूज करेंगे, 8 into A divided by required quantity. फॉर एग्जाम्पल आपके पास 3 इक्विपमेंट्स हैं, 3 बैचिंग प्लांट्स हैं, रिक्वायर्ड क्वांटिटी वाज 5, तो 3 by 5 into 8 आपका ये स्कोर होगा फॉर द बैचिंग प्लांट. Similarly, for each of the equipments, you will calculate the score. इन सबको ऐड कर लेंगे and इसको out of 20 convert कर लेंगे, and this will be your marks or score for equipment capability. Then comes the financial capability. तो उसके हवाले से बैंक क्रेडिट कितना है, तो उसके हवाले से यहाँ पे आपको फॉर्मूलाज दिए हुए हैं कि अगर 500 मिलियन से ज़्यादा हो तो क्या फार्मूला यूज़ करेंगे, 500 मिलियन से कम हो तो क्या यूज़ करेंगे, तो सारी डिटेल्स यहाँ पे गिवन है. रजिस्ट्रेशन विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अगर रजिस्ट्रेशन है तो आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अगर नहीं है तो 0. कॉपी ऑफ लाइसेंस, इलेक्ट्रिकल लाइसेंस, तो अगर है तो लाइसेंस है आपके पास तो 5 मार्क्स, अदरवाइज no marks will be given. Litigation history in which decision has been given against the firm. तो अगर नहीं है तो आप अपना एक एफिडेविट प्रोवाइड करेंगे कि हमारे ऊपर कोई लिटिगेशन हिस्ट्री नहीं है. तो अगर आपने एफिडेविट प्रोवाइड किया दैट मीन्स कि आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे, अदरवाइज नहीं. एंड सिमिलरली आप एक एफिडेविट प्रोवाइड करेंगे तो आपको कभी ब्लैकलिस्ट भी नहीं किया गया. In that case, अगर आपने affidavit provide किया है, you will be given 5 marks, otherwise no marks will be to you, and the total will be 30. So this was the pre-qualification procedure as per the Marks Engineering Concept. मैंने quickly review किया है, आप details से थोड़ा सा देखें इसको. If there is any question, you can ask next class. ओके सर. फिलहाल कोई क्वेश्चन है? नो सर. Okay, if there is no question, we can end up this class. Thank you so much.